2:45 PM to 3:30 PM के बीच में अगर रिच बैंक में ये सारे ट्रेड्स हुए हैं, देन रिच बैंक के स्टॉक का क्लोज प्राइस क्या होगा? एंड आपके पास है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 405, ऑप्शन बी 380, ऑप्शन सी 382, and option D, which is 385. Comment below, your time starts now, and let me know your right answer. And अगर आपका जवाब ऑप्शन B 380 है, then let me tell you guys that आपका जवाब गलत है। हाँ जी, आपका जवाब गलत है। The right answer is not B. So let's go and check what is the right answer. Hello and namaste everyone. I'm Asmita Patel and today we're going to talk about how do you find the close price at NSE. So let's understand this. So हम आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल के लिए। तो पहले तो हम ये समझते हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि क्लोज प्राइस जो है इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ द डे। जी नहीं, इट्स नॉट दैट। क्लोज प्राइस इज द वेटेड एवरेज। आई रिपीट, वेटेड एवरेज ऑफ द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे। सो जो भी 3 से 3:30 के बीच में प्राइस ट्रेड होता है उसका वेटेड एवरेज है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसके वेटेड एवरेज। क्या? सो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम इनटू प्राइस कर लेते हैं। सो वॉल्यूम इनटू प्राइस विच इज 4050। अब हमने यहाँ पे प्राइस कर लिया। अब हमने कहा कि क्लोज जो इज अ वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे, which means from 3 PM to 3:30 PM. तो ये तो 245 and 255 के ट्रेड्स है ना, तो ये दोनों वैल्यूज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। We'll be only looking at these values. यो तो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसका सम करते हैं। सम ऑफ this value. Now we have the total sum which is 83,910. अब हम लास्ट के ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो 4 ट्रेड्स हुए हैं, हम इसका सम निकालेंगे, right? And let's do the sum of here to here. And now we have 218. And to find the average, the weighted average, we would do this divided by this. And therefore, the right answer is 385. हाँ जी, so the right answer is 385. अब आपकी स्क्रीन में एक और सवाल मैंने डाला है। I want you to calculate the right answer for this and put it in the comment below. I hope guys this video just helped you to get a little more better understanding with respect to the close price. And thank you so much for supporting us every single day. And thank you so much for subscribing to our channel, everyone. If you haven't subscribed to our channel, click on that subscribe button right now, and I will see you guys there in the next video. Till then, keep smiling, take care, and stay blessed. Thank you so much.